हे एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अ टॉपिक नेम्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो suppose we have an equation of the form m dx plus n dy is equal to 0. Then this equation is called exact. Okay, this equation is an exact differential equation. Exact differential equation, if it satisfies exact differential equation, if it satisfies a condition del m by del y is equal to del n by del x. That is, partial derivative of m with respect to y is equal to partial derivative of n with respect to x. So let's see some of the example. So consider the equation example. Check for exactness. Check for exactness. हमें बस चेक करना है कि इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं है. सो दिस इज एक्स पावर 4 माइनस 2xy² प्लस y टू द पावर 4 dx माइनस 2x² माइनस 4xy³ प्लस sin y into dy is equal to 0. So let's check for the exactness solution. So हम कंपेयर करेंगे given equation, comparing given equation with this m dx plus n dy is equal to 0. तो देखिए dx का कोएफिशिएंट m होता है, यहाँ पर dx का कोएफिशिएंट m होता है. So therefore this m is equal to x to the power 4 minus 2xy² plus y to the power 4. Now what is n? So n is the coefficient of dy. So here we have dy and here is the coefficient of dy. So therefore this n is equals to minus 2x² minus 4xy³ plus sin y. Multiply this minus sign to the bracket. So this is minus 2x² minus minus plus 4xy³ minus into plus is minus. This is sin y. So therefore find the partial derivative of m with respect to y, del m by del y. So this is a del y of m, and what is m? X to the power 4 minus 2xy² plus y to the power 4. अब यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y फाइंड करना है, तो x कांस्टेंट हो जाएगा. सो दिस विल बी डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली माइनस यहाँ पे 2x कांस्टेंट हो जाएगा, and this will be partial derivative of y² with respect to y and plus partial derivative of y to the power 4 with respect to y. Now can you find this?
what will be the partial derivative of x to the power 4 with respect to y? तो y कांस्टेंट x कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो, सो दिस विल बी जीरो माइनस 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू y 2y, प्लस y टू द पावर 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू y 4 इंटू वाई टू द पावर 4 माइनस 1, so this is equal to minus 2 into 2 4 xy plus this will be 4 y to the power 3, and this is del m by del y. So suppose this is equation number 1. Now let's find the partial derivative of n with respect to x. So also here del n by del x, it is nothing but del by del x of n, and n is minus 2x square y plus 4xy cube minus sin y. So this is equal to minus twice, दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये y डेरिवेटिव के बाहर जाएगा, ये रहेगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 और y क्यूब कांस्टेंट हो जाएगा डेरिवेटिव के बाहर, एंड दिस इज डेल बाय डेल y ऑफ x, सॉरी del by del x of x, and minus this will be partial derivative of sin y with respect to x. Now this is minus twice y. What is the derivative of x square with respect to x? It is 2x plus 4y cube. What is the derivative of x with respect to x? 1, and the sin y, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो साइन वाई कांस्टेंट हो गया, तो इसका डेरिवेटिव जाएगा जीरो, सो दिस इज माइनस 4xy plus 4y cube, and suppose this is equation number 2. So therefore from 1 and 2, from equation 1 and equation number 2, so this is del n by del x, we have del m by del y is equal to del n by del x, and therefore given equation is an exact differential equation. Given equation is an exact differential equation. Okay, let's discuss some more examples. So here is the example. Check for exactness. Exact है कि नहीं बस check करना है. So we have equation e power y dx plus x into e power y plus twice y into dy is equal to 0. So let's solve this. So solution, on comparing given equation, on comparing given equation with m into dx plus n into dy equal to 0. तो यहाँ dx का कोएफिशिएंट है m, यहाँ dx का कोएफिशिएंट है e power y. So therefore this m is nothing but e power y. dy का कोएफिशिएंट, okay, dy coefficient is n, and here dy coefficient is this bracket. So therefore this n is nothing but this whole bracket x e to the power y
plus 2y. Now find the partial derivatives. So del m by the del y. So partial derivative of m with respect to y is nothing but del y of e to the power y. And here del n by del x is nothing but the partial derivative of n. So that is x e power y plus 2y. Now let's find the partial derivative. Here we have partial derivative of e to the power y. It with respect to y is nothing but e to the power y. So this is del m by del y. Suppose this is our equation number 1. And here this is nothing but del by del x of x into e to the power y plus del by del x of 2y. So पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो ई पावर वाई हो जाएगा कांस्टेंट, तो वो डेरिवेटिव के बाहर जाएगा इनटू दिस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस व्हाट विल बी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस 2y विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो पार्शियल डेरिवेटिव एक्स लेंगे तो 2y कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. तो ये हो जाएगा e टू द पावर y. एंड व्हाट इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x? इट इज 1. So this is e to the power y, and this is nothing but partial derivative of n with respect to x. Suppose this is equation number 2. So therefore from 1 and 2, from 1 and equation number 2, you can see del m by del y is equal to del n by del x, and therefore given equation is exact. Given equation is an exact differential equation. Exact differential equation. Let's see some more examples. Consider an example. Check for exactness. Check for exactness. So we have this equation y plus y into cos of xy dx plus x plus x into cos of xy into dy is equal to 0. So solution, let's solve this. So compare given equation with standard equation, which is m dx plus n dy equal to 0. So after comparison, m is the coefficient of dx. dx का coefficient m है, तो ये हो जाएगा y plus y into cos of xy, and what is n? n is the coefficient of dy, so this bracket will be n. So it is x plus x into cos of xy. Therefore take the partial derivative. So del m by del y is nothing but del y of m. M means this bracket, y plus y cos of xy. Okay, now find the derivative. So this is del y by del y plus del y of y into cos of xy. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y होता है 1 प्लस, यहाँ पर हम यूज करेंगे चेन रूल. सो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला. डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, दो फंक्शन है u v, ये होता है u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. तो यहाँ हो जाएगा ये y जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा u, और ये जो cos ऑफ एक्स वाई है ये हो जाएगा v. तो बाय चेन रूल ये हो जाएगा y इंटू डेरिवेटिव पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू u, डेरिवेटिव ऑफ पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू y ऑफ u मीन्स y, प्लस this will be the partial derivative. Okay,
this will be cos, no, partial derivative of v, v means cos of xy plus v यानी cos of xy into partial derivative of u, u means this y. Okay, so this is the chain rule. Let me erase this. Okay, now let's find the derivative. So this is 1 plus y, यहाँ पर ये एक्स वाई को हम u लेंगे तो ये हो जाएगा डेल बाय डेल वाई ऑफ कॉस ऑफ u. ओके, प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ y इज 1. रिमेंबर हियर, okay, this is del by del y of cos u. What is u here? Here u is equal to xy. So यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस y इंटू, यहाँ पे डेल वाई की जगह हम लिखेंगे डेल बाय डेल यू और cos u एज इट इज. जब हम डेल बाय डेल वाई की जगह लिखेंगे डेल बाय डेल यू, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है बाय डेल यू बाय डेल वाई. दिस इज कॉल्ड द चेन रूल. यहाँ से यहाँ तक and plus this cos of xy as it is. But what is u now? तो cos u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u हो जाएगा माइनस साइन u इंटू इस जाएगा डेल बाय डेल वाई ऑफ u. u मीन्स व्हाट हियर? दिस xy. रिमेंबर दिस xy इज u. तो यहाँ पे हो जाएगा xy एंड प्लस दिस cos ऑफ xy. तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 1 माइनस वाई इंटू साइन, व्हाट इज u? u इज एक्स वाई इंटू, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड कर रहे हैं तो x कांस्टेंट हो जाएगा, x बाहर, एंड दिस विल बी डेल बाय डेल y ऑफ सिंपल y प्लस cos xy. सो दिस इज 1 माइनस y इंटू साइन xy into this x, partial derivative of y with respect to y is 1 plus cos of xy, and hence this is 1 minus xy into sin xy plus cos of xy. This is del m by del y. So suppose this is your equation number 1. Now here we have our n. So therefore del n by del x, this we have to find. ये हो जाएगा partial derivative with respect to x of this x plus x into cos of xy. Now this is del by del x of x plus ये हो जाएगा del by del x of x into cos of xy. Now this is equal to पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x होता है 1 विथ रिस्पेक्ट टू x लिया तो, प्लस यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे. ओके, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ uv? दिस इज u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. तो ये हो जाएगा x, x मतलब हमारा यहाँ पे जो u है वो बन जाएगा x, और ये जो cos xy है ये टोटल ये बन जाएगा हमारा v. तो यहाँ पे होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x u प्लस v, sorry, u into partial derivative of v, v is cos of xy plus v, v यानी cos xy again into partial derivative of u. So this will be partial derivative of x. Okay,
तो ये हो जाएगा हमारा दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अगेन यहाँ पर ये जो एक्स वाई है, ये एक्स वाई को हम कंसिडर करेंगे यू, तो ये हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ कॉस ऑफ यू प्लस ये कॉस एक्स वाई, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है 1, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पर u है, यहाँ पर u है और पार्शियल डेरिवेटिव में x है, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे डेल बाय डेल एक्स की जगह लिखेंगे डेल बाय डेल यू। और जब भी हम ऐसे डेल बाय डेल एक्स की जगह डेल बाय डेल यू लिखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करना है बाय डेल यू बाय डेल एक्स, सॉरी डेल यू बाय, या डेल यू बाय डेल एक्स। तो यहाँ पे बीच में रहेगा कॉस ऑफ यू। ओके, ओके, दिस इज कॉस यू, ये टर्म एज इट इज यहाँ पे कॉस यू प्लस ये कॉस एक्स वाई एज इट इज। नाउ दिस इज 1 प्लस 1 प्लस दिस एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कॉस यू होता है माइनस ऑफ साइन यू इंटू डेल बाय डेल एक्स ऑफ यू प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई एज इट इज। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स साइन ऑफ यू, बट व्हाट इज यू, यू हमने पुट किया था एक्स वाई को, ये यहाँ पे देखो, सो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स वाई इंटू डेल बाय डेल एक्स ऑफ यू, यू इज अगेन एक्स वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू वाई। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स वाई। यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, तो वाई कांस्टेंट हो जाएगा वो पार्शियल डेरिवेटिव के बाहर, से पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू वाई। सो दिस इज 1 माइनस, ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई इंटू साइन ऑफ एक्स वाई प्लस cos of xy. So this is nothing but del n by del x. Okay, so this is our equation number 2. So therefore from equation number 1 and 2, from equation 1 and equation number 2, you can see del m by del y is equal to del n by del x, and therefore given equation is an exact differential equation. Given equation is an exact differential equation. So we'll try some more examples, but let's stop here and we'll meet in the next class. Thank you.